Good morning, sir. DST Sikkim. ये मेघालय ने कर रहा है। हाँ मेघालय सर। Good morning, sir. Very good morning, sir. मैंने सर एक रिक्वेस्ट किया है स्क्रीन शेयर के लिए, जस्ट चेक करने के लिए कि वो प्रेजेंटेशन काम कर रहा है या नहीं, जरा अप्रूव कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं करवा देता हूँ, जरा लगाओ, मैं तुरंत।
ठीक है। हेलो सर, आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन एक स्लाइड दे करके सर चेक कर लें सर। मैं वही कह रहा हूँ सर, दिखाई दे रहा है आपको? या सर, इट इज विजिबल। बस ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। Sir, may I wait for 5 minutes till all the speakers or most of the speakers may join? Yes sir, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स वेट फॉर 5 minutes because I don't see quite a Just lot of participants. I'm calling Yes them sir. also just to join the. Yes sir.
इनको इसका बात दे दिया जाएगा, चौथा में कर दिया जाएगा उनको। ये किसका इनके ओ कॉलेज में ये किसका है कैमरा कुछ हाँ, शेयर आ करेंगे, गया। शेयरिंग नहीं अभी नहीं, शेयर नहीं। So sir, may I start? यस सर, स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, चूंकि आपको शायद प्रोग्राम है कहीं जाने का, तो हाँ that's why. Almost the speakers have and they have just informed us that they will join within 5 minutes. Of course, Dr. N.K. Singh Sahab, he will join after half an hour because he is somewhere outside his home. So by then, I think we should start so that okay, sir. Yes, sir. Okay, so good morning and a very warm welcome in this Azadi ka Amrit Mahotsav कार्यक्रम sir. Dr. M. Ravichandran, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India. Dr. Devpriya Datta, a Scientist cum Advisor, Department of Science and Technology, Government of India. Dr. Rashmi Sharma, Scientist, Department of Science and Technology, Government of India. Distinguished speakers, Dr. Somen Mati, Chief Technology Officer, Technology and Action for Rural Advancement and Vice President, Development Alternative, Bihar, and Dr. N.K. Singh, Professor cum Chief Scientist, Dr. Rajendra Prasad, Central Agriculture University, Pusa, Samastipur, Dr. T.K. Kole, Scientist, Indian Council of Agriculture Research, Dr. Rohit Ranjan, Government Ayurvedic College and Hospital, Patna, and some young new innovators, Mrs. Salini Kumari, Dr. Rakesh, Dr. Mr. Abhishek Bhagat, Mr. Suraj Kumar, and coordinator of this program, Meghalaya State Council on Science and Technology. At the outset, I would like to thank each one of you for joining this one-day program with a very warm welcome in this Azadi Ka Amrit Mahotsav कार्यक्रम. The theme of this program for the month of December is Indigenous Technology. My hearty welcome to again officials of DST, Government of India, for taking this relevant and cited initiative to celebrate a year-long program as Vigyan Mahotsav. On behalf of Bihar Council on Science and Technology, I accord a genuine welcome to Sri C.V. Darlong Dengo, Member Secretary, State Council of Science, Technology and Environment, Meghalaya, and his whole team for taking this responsibility as organizer of this event, Vigyan Mahotsav under Azadi Ka Amrit Mahotsav कार्यक्रम. I would like also to offer my regard to all the renowned speakers and eminent scholars, Dr. Somen Mati ji, Dr. N.K. Singh Sahab, Dr. T.K. Kole ji, again Dr. Rohit Ranjan ji, and my new young innovators. Sir, your valuable suggestions and inputs will help the DST Government of India as well as BCST Bihar just to get some valuable inputs, and it will be quite useful in making the policy of not only State Council but DST Government of India also. I wish to extend a very warm welcome to representatives of the State Council on Science and Technology and others who have joined us today to make this program successful. Sir, the theme of this program is Indigenous Technology. And the simple meaning of indigenous technology is to use the local and natural resources with an environment of locally skilled manpower as far as possible. Another advantage of indigenous technology, what I can understand, that it should be environment friendly, sustainable, and inclusive in nature. If we talk about eco-friendly and sustainable indigenous technology, we must look the natural phenomenon, because nature is the greatest laboratory to think about. And India has been a land of rich natural resources, and nature's blessings are abundant here. Let us see some examples.
In terms of energy, huge nuclear reactor that is 1.39 million kilometer in diameter and 150 million kilometer away from us, that is sun, will daily generate a virtually endless supply of free electricity for the next 6.5 billion years. With an average of 300 sunny days here, the potential solar energy available to India is some 5,000 trillion kilowatt hours, which is more than what the total output of all oil and coal reserves in the country could generate here. And the sun generated electricity to run industrial machinery and domestic appliances is non-polluting and free of cost. So here the indigenous technology will play a vital role to explore the solar energy to just meet the energy demand. If we see some biological activities like fireflies, world's most efficient light producer, that is fireflies, produce light through an efficient chemical reactions that allows them to glow without wasting heat energy. We all know that in terms of light energy, 80% of energy goes as heat energy, as a waste energy. But if we use the mechanism of these fireflies, there is no loss in energy in form of heat. If we think about large insects as a drone and biobot, large insects may be implanted with electronic and micro fluidic control units of monitoring or even making autonomous drones. If you think about human brain, storage capacity is unlimited, and a piece of brain tissue the size of a grain of sand contains 1 lakh neurons and 1 billion synapses all communicating with each other. So why not to think to make a computer like human brain? If we talk about kidney, it is an amazing filtering device consists of at least 1 to 2 million nephrons and cover a distance of 16 kilometers and filter at the rate of 160 liters per day. And you see what type of energy that kidney is using. If we see coconut trees, the efficient water pump, it uses osmotic pump without external energy or simply the energy from the sunlight. Likewise, if we see leguminous plant, most effective machine to produce ammonia that is without any noise, without creating any pollution. How this leguminous plant fixes nitrogen from the atmosphere and it is making ammonia. But if we produce ammonia, it requires a very vast area of land and heavy machinery, and the result is that the pollution is the result. So why not to think about how the mechanism of leguminous plant, how it is synthesizing ammonia and without creating any atmospheric pollution, noise pollution, air pollution. Similarly, if we think about fruit peel, packaging material, it is biodegradable. How efficiently it covers the ripe mangoes and other fruits, and it protects as well as the peel is biodegradable. So if we talk about indigenous technology, we have to think about the natural phenomenon. We have to learn from the natural activities that is prevalent in nature. Then the technology, not only it would be indigenous, but it would be sustainable also and eco-friendly also. So that's why our Prime Minister has given a slogan that is vocal for local and local to global. And this can only be this dream can only be fulfilled if we seriously think about indigenous technology. So that's why India is celebrating its 75th year of independence, and Honorable Prime Minister has desired to infuse new energy and new consciousness among the countrymen by showcasing the celebrating achievements of the last 75 years through Azadi Ka Amrit Mahotsav. To formulate a work plan in a holistic way, the Department of Science and Technology, Government of India, under its state councils, is showcasing and celebrating a year-long program, Vigyan Utsav Festival, through the state and technology councils. Objective of this program, objective of the program of this very month, that is indigenous technologies, to showcase the local indigenous technologies of the state,
to highlight the usage of local indigenous technology in different sector and its potential for upgradation, to highlight the science and technology potential of the indigenous technology and towards Atmanirbhar Bharat. So now the steps required to be taken is a separate cell should be created at a state level to promote indigenous technology in coordination with the apex regulatory bodies like AICT, UGC, national vocational councils. And next one is the patent information should be established in the state council like Bihar as soon as possible. Bihar state has no patent information cell, and so many students, and not only the people having no formal degree, but they have beautiful ideas, but in lack of patent information cell in the state, their concept, their views, they cannot be carried forward. So my request to DST government of India is to consider the establishment of patent information cell in the state as soon as possible. The next one, the sanction of research project. These 2 points I have been reiterating since the last 3 programs. The sanction of the research project should be decentralized. That is, sanctioning power of project of certain values should be given to a state council subject to the guideline issued by the DST government of India. This will help to facilitate and encourage the young scientists and innovators coming up with smaller projects. And last one, the capacity building of the state council and institution, especially of states like Bihar, is required for implementation of activities of science and technology and innovation activities. Sir, these are my few suggestions for DST government of India, and again a very warm welcome to all of you, and I'm sure that this program will be quite productive and worth our precious time. Thank you, sir. And with this welcome address, now I invite Dr. Somen Matiji to just address the. Thank you, sir, very much for giving me this opportunity in sharing. Let me check how do I share this? Yeah. No, this is not. Just give me a second to look at how do I share this. This is open. Can you see the presentation? No, sir. Presentation is not visible, sir. Yeah, it is coming. Okay. Okay. Yeah, it is visible now, sir. Is this visible now? Yeah, sir. Please. Okay. So thank you, sir, for this nice introduction. What I'm going to share with you today is the interventions that we had started in the state of Bihar, basically looking at in the clay brick technology, how to improve the energy and the environment efficiencies, how to improve the quality also. Now, before I start, this technology is the definitions that you gave of indigenous technology, sir. That was very, very interesting, because this is a technology which we had. It was supported to us by the Department of Science and Technology, the seed division, to take it out and bring it out in the open field. This is being practiced by, this is an truly indigenous technologies, because this is simple, very, very simple, easy to use, and it is developed by, it is available with us for probably for more than 100 years. This is a very important one, which is being practiced in the Malwa region near Indore, Ujjain, that belt.
also in certain parts, in southern part of India also. People do use it, has been utilized using this for centuries. And now what we have done is we have gathered that knowledge, turned it into a scientific kind of a knowledge, and then brought it back, especially for the state of Bihar. Now, the objectives of this initiative was threefold. Number one was to improve the energy and the environment efficiency of the clay brick sector, because as the clay brick sector, not only in Bihar, but the entire part of northern India is mainly practicing the fixed chimney BTKs or the zigzag. So this is a small improvement which we can make to have much larger gains. And the second thing was on the profitability part. If the quality should improve and the production or the manufacturers or the brick entrepreneurs, they should earn at least a higher profits. Because until unless it is profitable enough, it will not be adopted by people. And most important, the goal that was given to us by DST was that it should fulfill the sustainable development goals. And how are you showcasing to fulfill the sustainable development goals and put India into the map, international map, through the brick sector? So it is just simple improvement in existing brick firing technologies, nothing great, and what we call it as unlocking the potentials. The technology is nothing, it is use of internal fuel in existing the brick making practices. I will explain to you in detail, a little bit more detail, and what do I mean it internal fuel. But these internal fuels are available in and around Bihar, in and around everywhere. This is available. To give you some ideas on the Bihar, why did we start working on the Bihar brick sector? Because we had been working in Bihar for the last 9-10 years along with the government of Bihar through the Department of Environment, Forest and State Pollution Control Board in the brick sector. So they had requested us is that if we can do some work on improving the clay brick industry. But three things that was given to us, three guidelines. Number one, it should not be highly capital intensive technology. Number two, it can be adopted by anybody and everybody. You don't, it is necessary, but it should not be a very special kind of an area of work. And number three is that you cannot, it should be, everybody can learn, everybody can benefit out of it. So based on these three, but first of all, what we did was we said that before we enter into Bihar or before we start our work, let us do an assessment of what is the status of the brick industry. We interacted with State Pollution Control Board, with the Department of Mining and Geology, and then after certain kind of initiatives, we found that Bihar, there are a huge number. Bihar probably is the third largest producer of bricks in the country, apart from Punjab, Bengal, and UP. And in the brick sector, in the state of Bihar, it's the third highest emitter of carbon dioxide. We are doing an carbon inventory in Bihar. The preliminary results that are coming is that only from the brick sector, apart from the improved technologies that is there, the zigzag and other things, still Bihar produces roughly around 12 million tons of CO2. 12 million tons of CO2 per year, only from the brick sector. Coupled with that, it uses roughly around 65 million tons of agricultural topsoil. And you can see the photographs there, where the whole area or the whole land in and around the rivers that has been taken out. But on the other hand, it probably is the highest employment generator in the state after agriculture. So it produces roughly employs about 7.7 to around 8 million people. And only from selling of bricks, it is around roughly around 140 billion amount of money that is generated. So the impact that we had wanted to create out of this intervention was that if this is adopted, this should be a step towards making Bihar a carbon neutral state, and that's the
dream of the chief minister also that by 2040 or by 2047, within the 100 years of India's independence, we should turn Bihar as a carbon neutral. It should create local employment, and the skills of the people should improve. And of course, this technology should be promoting more entrepreneurs, more people in taking these technologies. Give you an idea, this is the kind of spread of the brick sector in Bihar. Gaya, incidentally, we were surprised. Gaya, incidentally, the district of Gaya has one of the highest number of brick kilns. 489. This is based on the data from Pollution Control Board. It might be even higher. These are authorized kilns. So Gaya and Patna shares almost the quite a high amount of brick kilns. But if you see in most of these areas, the color marked by the dark red is Gaya, then it's Patna, and the dark yellow East Champaran, West Champaran, Saran, Muzaffarpur, Darbhanga, Vaishali, all of these places, even Nalanda and Nawada, these places have very high number of brick kilns. And all of these are fixed chimney kilns and the new kilns which is coming up, which is the zigzag. Now, if this is the kind of situation in the brick kilns, this is the amount of coal that is being consumed. Why I am looking at the coal? Because coal directly gives you the CO2 emissions. So if this is the coal consumed, then these are the number of CO2 that is being generated annually from these various districts. The districts in the northern part or in the districts in the eastern part, they are a little bit lower in emission, but most of the emission is from Patna, Gaya. It's obvious because there will be a number of brick kilns. And similarly, if this is the kind of CO2 that is being generated, this is the kind of suspended particulate matter also. We generate that. If I can give an example, that the amount of SPM that is generated by the whole of Bihar, it is enough to cover a city like Patna within half a meter of dust. So what we did was that because it was not possible for us to cover the entire state, so because the funds were limited, so we said that we are going to take up a small intervention, do a demonstration in one area and see whether it is beneficial or not. So we selected Bhagalpur as our intervention cluster, and we did a survey of these 3 areas. Now, the technology is simple. You have, for brick making, you have soil in one hand. Soil is the main ingredient, and as a fuel, you use coal. What we did was, instead of using the coal as an externally, we ground the coal in the form of a coal dust, or you can use it in the form of a coal dust, and we mix it with the soil. So that instead of external energy, we put the energy from the soil into the brick as an internal fuel. That is the reason why we call it as an internal fuel. Now, there are certain other sciences behind it. There was a lot of other tests that we do. So the coal dust that we used here, or the internal fuel that we used here, was you can use any carbonaceous waste materials, any waste materials which has carbon in it. So examples, you can use rice husk ash, the black colored ash. You can use boiler ash from any industry which uses boilers, or you can use coal slurry, sponge, or anything which is blackish in color and which has a calorific value of roughly around 2000. In the present experimentation, we used coal slurry, which was given to us by Tata mines, the coal mines from Tatas, situated in Dhanbad, Singrauli, that area. They said that we can give it to you at a very low cost. The tonnage that they gave, they usually sell it at 2,000 rupees per ton compared to the 10,000 rupees per ton of coal. So we use that. It is to be used while you are mixing the soil. It is to be used within the soil, and depending upon the quality of a soil or depending upon the quality of the dust, the percentage varies between 2 to 5. Why this is so? Because we didn't want to adversely affect the brick, and we didn't want to destroy the quality.
the quality should be more or less equal or even improved. And it can be used, since it is used in the green brick making system, it can be used in any technologies, irrespective of the firing, anywhere in the country. Because in most of the India, you use soil as an for making bricks. So anywhere in the country, you can use it. Anywhere in any firing technologies, you can use it throughout everywhere. Now, what we do is that first of all, you take the heap of a clay as normal in the practice. On top of that, you spread the internal fluid. The measurement is by volume. Well, the measurement is always by weight, but we turn it into volume so it is easy to use for local workers. And then you do a little bit of manual mixing, mix it with water, and then you put the whole stuff into the mixed thing into a pug mill. Here, I must mention that the pug mill is necessary because until unless it is uniformly mixed, you will not be able to achieve the desired result. And then you do as last one, you do a standard manual molding. So the first 3 steps are important in this. There is nothing, no rocket science behind it. The results that we achieved, you can see we started, this was the top figure is from the laboratory. In the lab, we started testing of the bricks, tested the soil in various percentages, 1 to 6. And we found that you cannot add more than 2% in a brick. So more than 2% means quite a lesser amount of quantity. And the green one, the graph, this is actually from the field when we used it and fired it in the kiln. Then these are the results which matches with our results in the lab, because once you do in the lab, you are being able to accurately do the quantity or quantify the amount that you need to add. But when you are doing it in actual field, then it is left up to the workers to do it. By the way, we trained around more than 100 workers in doing this in the kilns in Bhagalpur, and everybody said that it is quite easy. In terms of quality, is this in terms of stack emission? Well, we think that we couldn't do it in a fixed chimney kiln because at that time there was a ban on operating fixed chimneys by the pollution control board, so everybody was operating the zigzag. Even in a zigzag kiln, if you reduce your SOx, NOx by 11% and your particulate matter by more than 30%, then what we think is going to improve quite a lot on the emissions also, stack emissions. Very, very clear. Profitability, the main profitability of this technology is by using of this waste. I told you the waste price of it is 2,000 rupees and the price of coal is 10,000 rupees. With this kind of technology, you can probably save roughly around 40% of the total energy, which can be done. And the profitability comes from saving of that coal. So there is an additional profitability. We didn't want to set up a new unit, but in the existing units, where we had did this demonstration, they told that yes, we can earn a additional profit of 20 to 25% over and above. The only machineries that you need is a coal crusher and nothing else, because the pug mill is always already there. If you want to add a pug mill, then it is fine. If you want an coal crusher, then it is also fine. Well, the payback was coming to roughly around 6 months to only a year, but well, we said that the payback period is between 1 to 2 years. So the general thing is that the saving is only from the coal. You need to investment on equipment, and there is the most important thing is that we didn't want the firemen who are there to say that they're going to change on the technology, anything. But no changes in firing practices, no change in the traditional technologies. It is only about follow the same principles. And the impacts that we made in terms of SDGs, this is quite remarkable. We not only promoted this, we did this in Bihar, but we took it to places in Africa also, because we work with a couple of other countries.
where everybody said that this is probably one of the best things that we have, because most of the countries, they do have waste. So what we see that with this technology, we hope that the increased amount of profits that will be generated, that will be shared with the workers. If you are reducing your CO2 emissions, then it is going to contribute to your good health and well-being. Even these are quite easy to do. Even women can work on this. And mind you, I'm telling this, in Africa, around 60% of the workers are women. So we promote a kind of equal gender or equal work opportunities. And of course, it is a decent kind of work where entrepreneurs or enterprises are coming up. Thank you, sir. And last, what I need is that the way forward is, as our Honorable Prime Minister has always said, that in the COP26 in Glasgow, that it is the decade of scaling out. So what we would like is, at the next step, we would not like it to be confined within Bihar, and with the help of Bihar Council for Science and Technology, we would like to promote it across the state. And with help of all of you, if anybody is willing to do it, we can work out with DST in doing a demonstration in your own states and then scaling it out in your own states. Thank you very much. Thank you, sir, for very informative as well as interesting lectures, and taking effort to put India into the international map in brick firing technology, and simultaneously to achieve the goal fixed under sustainable development, 17 sustainable development goal. So, sir, thank you very much. And sir, we assure you from on the behalf of Bihar Council on Science and Technology that whatever your suggestion have come, we shall meet together, sit together, and work together to achieve this goal. Because Bihar is the second most populous state, and here of course the home demand is very large. The density of population density of Bihar is also very high. Each and every people need a house, and for house brick is required. So sir, you have covered a very basic and interesting area to not only to address the basic issues, but the largest workforce, as I think, is involved in brick making. Because I belong to rural area, so I see it very closely, that how much workforce is involved, and what are the other ill causes for just for the air pollution point of view, and of course the living condition of labor also. So you have taken, sir, a very basic thing for Bihar, and this is required. Whatever we do for, under innovation or research, this must be society oriented. And sir, very beautiful and sir, remarkable, sir. You have your effort is, sir. Sir, on behalf of BCST, I again salute you, sir, for taking this effort, sir. Thank you. Thank you very much. Sir. Thank you, sir, very much. I will have to go, sir, with your permission, because I have to catch a flight back to Delhi. I know your program already, sir. Yes, That's sir. why. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, you may leave, sir. So now I request Dr. T.K. Koleji just to give his presentation. Yes, sir. Dr. T.K. Is it visible now? It is quite visible, sir. Good afternoon, respected Director of Bihar Council of Science and Technology, and all distinguished persons who are going to present their technology, their idea, and
they will show their different suggestion in their presentation. On behalf of ICAR Research Complex for Eastern Region, I am going to present what ICAR Research Complex is now going research on indigenous technology, and what is the future need, where we will do. If I see the outline here, you can find here that first I will discuss about ITK documentation. That is very important part of indigenous technological knowledge. After that, I will discuss some intellectual property right, what ICR, RCR are following, and after that, some of the work is going on ITK validation, and many of the agriculture research present day going on ITK upgradation. In our research station, we studied one very unique research where indigenous leafy vegetable which are consumed by tribals, we documented them, we analyzed their for nutritional content, and we also studied the their water use efficiency, many other things we have studied. And it is although it is not related to Bihar, it is mostly work was done on earlier Bihar, that is now present in Jharkhand. There we found various flowers and wild plants which are edible by tribal, and we documented and we published this document. What I realized, this type of indigenous foods are available in abundant, and we can explore this type of foods. Not only vegetables, there are many other edible fruits, and many fruits, wild fruits are there in Bihar, which need to be analyzed for their nutritional concentration. You might have heard recently government is also focusing on anemia. So by last 5 years, people are here suffering from this anemia, and we need to explore some of the traditional food which can be easily grow in this region, and they are mostly climate resilient, and as well as they can feed with good nutrition to a mass population. Beside this, some of the work here going on wild mushroom, you have heard many our rural population, they grow some wild mushroom like Rugda, Technas. These are the two species, and we have collected, identified, and also conserved in our in situ situation. Now, last 4 years, directive give emphasis on medicinal plants, and during I study the indigenous technological knowledge, I found there's a lot of traditional medicine were used, were documented our earlier literature, and with taking inspiration, we have collected many medicinal plants which is grown naturally in Bihar, and we maintained in our herbal garden. And here we studied their medicinal property, and some of time we are going to validate their property within available facilities. Beside this, this region have a huge diversity in indigenous cattle. They are very much climate resilient. What our director, Bihar's Council of Science and Technology told, that they are more
climate resilient. So these cattle, these animals are very good. They can sustain in our varied climatic condition, and with this condition their performance is much better than introduced breed like Sahiwal and all these outside cattle. So as a research institute, we are documenting their character, like here Gangatiri, Sahadabadi, Daira buffalo, and Boucher cattle, and one is very important, that is Ghungru pig. So all these animals we are doing their character, their milk yielding capacity, meat yielding capacity, all these things. Similarly, we also still characterizing like Kosi buffalo, Simanchali sheep, Palamu goat, and interestingly, we have identified many of the animals have very good stability in terms of their milk content, milk quality, as well as their meat quality. Besides animal, we also looking some of the indigenous fish, and you know the Ganga river is the main river of Bihar, and here Son river and in another side Gandok river have contributed a lot in their diversity of indigenous animals, particularly fauna. So in Patna also you might have heard that a Son ke machli. So Son machli kya? What is the different type of fish available in Son, Gandak and Ganga? So we studied there, and as a result we found there is a lot of variation in traditional fish. And if you find here, you can see their uniqueness, and we are preserving as a fish museum one of the our center situated at Darbhanga, where we mostly doing work on water stagnant condition, that is water surplus ecology, and there we are searching this what kind of fishes are available in this region. Next important is the IPR issue. You might have heard that Basmati issue. The Basmati was our traditional wealth, and it was only protected because of our prior art, documented prior art. But many time our that indigenous material which present in Bihar are not protected from intellectual property. As a research organization, we are doing for registration, and sometimes we give credit to the farmers who have developed this variety, who maintain their material from thousand and thousand years by their earlier generation. And here, if we think that as you can see here, we have collected many germplasm on vegetables. It is approximately more than 500 numbers germplasm we have collected, and we deposited in NBPGR, which is the apex body where we can preserve this unique material. Besides this, in fruit crop, we also deposited many germplasm which is maintained in situ, and most of the notable are in jackfruit, bale, lychee, and mango. And if you see here, one of the important work that farmers property right, our one of the center at Ranchi, they are trying to give the credit of the farmer. Here you can see that it is a jackfruit tree which have huge prolific bearer and very tasty, and it is available twice in a year. So
based from the information of farmers, we have given the right to the farmers, and ICR as a research organization, we are multiplying this seedling, and after selling the seedlings, what remuneration we are getting, we are sharing with this farmer. So in this way, we are also protecting the indigenous people's rights. Similarly, we have recently registered two breed. One is Purnia cattle, another is Maithili duck. That is unique in this eastern India. And we also registered one unique things. You might have heard the Black Bengal goat, which have which gives at a time 4 to 5 that kids. So this is the female, and this is their kids. So this is unique things, and farmers maintaining this population from long time. And that 8 gene sequence we registered in NCBI USA, which declared that what is the gene responsible for this polyphycacy. And beside this, ICR also registered 2 farmers variety on lychee and cucumber. We also have done some of the indigenous technology validation. One of the leafy vegetables, that is Nida fluctuans, it is having some antimicrobial property. It is used in local folklore. So what we do as a researcher, we have collected this, we profiled in high resolution liquid chromatography and mass spectrometry. After that, we go for its details microbial screening, and what result we find, again we validating using molecular docking, and we find that really it's a very good capacity against antimicrobial capacity against Shigella flexneri, and which is in line with its traditional folklore. So in this way, in future, we are planning to do research in indigenous plant which have some of the unique bioactive property, and we will validate in vitro or in vivo condition. Our institute also working on upgradation of indigenous technology. Like you might have heard this indigenous fish, that is magur, koi, singi, gonias. They are bred naturally in a river, pond, but till now no very much document is available how to we breed in artificial condition. And as a research in institute, we are successfully have done this breeding technique for koi, magur and gonias, and we this will emphasize this fish market, and rural population get huge benefit from this. Beside this, you have heard that integrated farming. Integrated farming was our traditional practice, particularly in fish farming. You have seen in village there is a pond. Beside this, there is a cattle, some poultry. So we validate this thought in terms of economics, in terms of environment, and we have found that if we go for this integration, we can get the fish production as par with concentrated feed. Now you might have heard that people using concentrated feed to increase the production from 0.786 ton per hectare to 5.75 ton. But if you simply integrate the fish farming with buffalo, that buffalo excreta will come to fish pond, and if you manage, you can get high remuneration. It is one kind of validation too. So
based on this, I feel we need to work for future. So particularly when we studied the various documents, we found that many underutilized fruits, vegetables, wild edibles are there in Bihar, but still now they are not fully export for their bioactive compounds. Uh, you might have heard that honey is unique quality, and unique have honey have unique quality, and many throughout the world people are searching specific honey, like in that Australia, New Zealand, they have certain specific traditional honey which have chemopreventive property, means they have some health benefit property. So it might have that our indigenous very product like our lychee honey, they might have some bioactive compound which we do not know. Similarly, many underutilized fruits, many wild edibles, they are very much rich in bioactive compounds, but still not they are explored properly. For this, we are planning here for a project that quality control lab, and we will work on that. And after that, I believe that this our director, he told that ITK, most of the ITK technology is climate resilient, and they can be used in our development. If you find last few years, Bihar is facing lot of problem, particularly in flood. So in this situation, we need to identify the local traditional knowledge on how to tackle this flood condition, and if possible we can improve this ITK for sustainable development. And after that, I request that Bihar Science and Technology Council for establishment of digital library of indigenous technologies or knowledge, because if you documented all this intelligence indigenous technology or knowledge, it will be useful for future generation, and it will not cost many. You need only a cell where you can maintain this document by means of video, audio, or if you have traditional text, just copy it. You might be know that this place was the Buddhism, and thousand literatures was there which have some traditional wisdom. Regarding this, I want to mention one of the folklore that in our this Buddha Bihar in Nalanda, our that conqueror came here, and their physician unable to treat them, so they called this Buddhist physician, and this physician came and treat the Bhaktiar Khilji. So he was surprised how these people have knowledge. They do not have any money, but they have traditional knowledge. So you can think this place have huge indigenous knowledge. If we can get some of the literature, we need to copy them and preserve them. And details animal studies are also important for indigenous food to export and trade. For this, I want to tell one thing. The Bihar itself produce a traditional food, that is makhana. Makhana here contributed approximately 85 to 90% of the country's production, and it has some nutritional value. Some of the traditional things, they told that it has some anti-diabetic property, but it have to be proved.
For this need lot of research. We have here agriculture university, agriculture institute, your medical institute. So combinedly they should work. So if really it is there, so this when this research outcome will come, it definitely increase the consumption of makhana, and indirectly it will promote the trade and export. Ultimately it will benefit for the youth of Bihar, people of the Bihar. So this is my today's presentation. Thank you. So, thank you, Dr. T.S. Kole Sahab. First, I would like to give you my special thank on behalf of BCST that since beginning of this program, you have spared your valuable time and you have given a beautiful suggestions as far as agriculture sector or animal husbandry sector is concerned. Of course, Bihar is one of the most important agricultural state, and whatever you have given presentation that is quite relevant to the state like Bihar. And I have observed from your presentation that only you are fulfilling the need of the people of the Bihar, but you are fulfilling the goal of the 17th sustainable goal, that is to provide quality and healthy life and the for or life underwater. These are some sustainable goal, and you have covered beautifully, and you have taken effort on all these points. So thank you, Kole Saab, and I'm just, sir, suggesting you. So whatever you have just given a presentation in the last slide, that some projects are required on 4 points. That is, first one is establishment of digital library for indigenous technology and knowledge. Next one was documentation of underutilized fruits and vegetables. Third one, identification of climate resilient IITK and their improvement for sustainable development. And fourth one, you had suggested to just to sanction a project on detailed animal studies on indigenous food in animal. Sir, I suggest you just to submit the presentation in the prescribed format of the DST government of India. We shall try our best to recommend your all these 4 projects to the DST government of India to get it sanctioned. Sir, if you have the prescribed format, it is okay. Otherwise, I will send it the prescribed format of DST government of India to your mail, and I expect that you will submit all these 4 proposals to BCST government of India. So, thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So now I invite Dr. Rohit Ranjan Sahab from Government Ayurvedic College Hospital, Patna. Sir, please. बिस्किट उस्किट है कि ना? Hello. Yeah, visible, Hello? sir. Your presentation is visible, sir. Okay, go Okay, ahead, okay. sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks to Anand sir for giving me this opportunity. And my topic is diet and lifestyle guidelines for COVID-19. जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि अभी जो कोविड पेंडेमिक आया था उसमें जो
इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें कि आपको आयुर्वेद, यूनानी, हेम्योपैथ, ये सभी जो आते हैं, इनका रोल काफ़ी बढ़ गया था। तो इसी कारण मैंने सर से डिस्कस किया था, तो सर ने कहा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा, आप इसके ऊपर जो है अपना प्रेजेंटेशन दें। तो इसको मैंने स्पेशली डाइट और लाइफ स्टाइल के ऊपर मैंने इसको फोकस किया है कि हम किस प्रकार अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, और जो कोविड-19 पेंडेमिक कभी चल रहा है, अब तो नया ओमिक्रॉन आ गया है, तो इसको कैसे हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं कोरोना वायरस, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है दैट कॉजेज इलनेस रैंकिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिजीजेस। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड दैट कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका आयुर्वेद में कहाँ ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन आता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक चरक संहिता, उसमें एक कंसेप्ट है जनपदोध्वंस का, और वहाँ पर क्लियर जो है जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है वो पेंडेमिक से मैच करते हैं। तो इस कारण से हम लोगों ने जो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाया, उसको जो है हमने उस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए जो है, और फिर जो भी हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, चाहे स्टेट लेवल पर भी जो तैयार हुआ, उसको देखते हुए जो है हम लोगों ने उसको बनाया है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 2 से 14 दिनों का होता है, और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो मेनली जो है कफ, डिस्निया, फीवर, मलेरिया, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, राइनरिया, ये सब जो है इसके लगभग सभी में ये साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं। और मेनली जो है इसमें डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर भी कभी कभी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट करें, तो इसमें 3 स्टेज में इसको हम लोग रोक सकते हैं। पहला तो प्रिवेंटिंग द वायरस इंटिंग टू आवर सेल्स, हमारे सेल्स में ना प्रवेश करे, इसके लिए हम इसको पहले ही रोक दें। यदि सेल में प्रवेश कर गया तो फिर स्टॉपिंग इट्स रिप्लिकेशन इफ इट गेट्स इनसाइड द सेल, एंड देन यदि वहां चला गया फिर जो है रिड्यूसिंग द डैमेज ऑफ ऑकर्स टू आवर टिश्यूज। तो इसको हम लोग मेनली 3 भागों में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बांट सकते हैं, जिसमें कि आयुर्वेदा प्रोफिलैक्टिक मेजर्स, सिम्टोमेटिक आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज रेस्टोरेशन थ्रू रसायन। हमारे रसायन का कंसेप्ट है। तो यदि इसको हम देखते हैं आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जो हमारा आयुर्वेद है, यह जो है रोगों की चिकित्सा नहीं पहले बताता है, पहले हम लोग जो है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए विचार करते हैं, और हमारा यही प्रयोजन भी है। आचार्य चरक ने बताया है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की हम रक्षा करें। उसके बाद यदि उसमें कहीं कुछ कमी रह जाती है और कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तब फिर जो यदि कोई रोगी विकार उत्पन्न हो गया है उसके शरीर में, तो फिर उसके विकारों का हम शमन करें। और इसके लिए जो है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे बना रहे, इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे मेजर्स बताए गए हैं, जिसमें कि आपको दिनचर्या है, सुबह जगने से लेकर के रात्रि सोने तक हमें किन कार्यों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, इसके विषय में काफी विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सद्वृत्त कंडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, इसका भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ वर्णन मिलता है। और उसके बाद जो सबसे मेन है वो आहार, हाँ, ऋतुचर्या का भी वर्णन है कि जो हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का कंसेप्ट है, उन ऋतुओं में किस प्रकार का हमारा आहार होना चाहिए, कैसा हमारा विहार होना चाहिए, इसका भी बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है। और आहार के विषय में स्पेशली फोकस किया गया है कि हमें किस प्रकार का आहार लेना है। आजकल जो है सब कुछ आहार के ऊपर डिपेंड हो गया है। इसी क्रम में जो है एक बहुत अच्छा वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें लिखा गया है कि पथ्य स्त्री गदा तस्य की मौषधि शेमड़े, पथ्य असति गदा तस्य की मौषधि शेमड़े। इसको यदि हम समझ लें तो सारी प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। यदि हमारा पथ्य मतलब हो गया डाइट, यदि हमारा डाइट सही है तो फिर हमें औषध की जरूरत नहीं है। और यदि हम कितना भी औषध ग्रहण कर लें, कितना भी हम मेडिसिन ले लें, और यदि हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है तो फिर औषध की कोई जरूरत नहीं, तो वहां पर भी औषध की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी हो जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए हम कितना भी औषधि लें और जो हमें बताया गया कि इसको सेवन करना है, इसको नहीं सेवन करना है, फिर भी उसको हम यदि लेते रहें तो फिर क्या होगा। जैसे सपोज दैट हम कामला का एग्जांपल लेते हैं, जॉन्डिस का, यदि उसमें बताया गया है कि मसालेदार चीजों को नहीं खाना है, तले भुने चीज नहीं खाने हैं, और हम मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में जो है हम तली भुनी चीजें भी खा रहे हैं और ऊपर से जो है मसालेदार भोजन कर रहे हैं, तो क्या होगा, कितना भी हम मेडिसिन लेते रहे लेकिन हमारा जो उसमें बिलिरुबिन का लेवल है या फिर एसजीओटी एसजीपीटी का जो लेवल है वो कभी कम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पथ्य सदी गदा तस्य की मौषधि से बड़े, पथ्य असति गदा तस्य की मौषधि से बड़े, मतलब
पथ्य का सेवन करते हैं तो औषध की आवश्यकता नहीं है, और यदि पथ्य का हम सेवन नहीं करते हैं तो भी औषध की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में जो आहार है उसको महाभेषज की संज्ञा दी गई है, मतलब औषधि से भी जो है उसको ऊपर बताया गया है। तो अब है कि हमें किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए। तो आहार में जो है षड्रस युक्त आहार का सेवन करें, मतलब ऐसा आहार लें जो कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इन रसों से युक्त हो। नियमित रूप से हमें दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें खाने में हल्दी, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और जो कुछ गरम मसाले होते हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो मेनली यहाँ पर 3 चीजें आती हैं, व्हाट वी ईट, व्हेन वी ईट, हाउ मच ईट। ठीक है, क्या हम खाएं, कितनी, कब खाएं और कितनी मात्रा में खाएं। तो मात्रा का भी है कि जब हम भोजन करते हैं तो जो हमारा स्टमक है उसको ध्यान में रखते हुए जो है भोजन करना चाहिए कि उसमें जो है हमें 2 भाग भोजन के लिए, 1 भाग जो है तरल पदार्थों के लिए और 1 भाग जो है ऐसे खाली छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम डाइट ग्रहण करते हैं उसका प्रॉपर वे में जो है उसका पाचन होता है। अगर इस तरह से हम भोजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो है प्रॉपर वे में पाचन नहीं होता है और जो हमारा शरीर है उसको पोषण नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। व्हेन वी ईट, कब हमें खाना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि जो हमारा आजकल खाने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जनरली हम लोग टीवी देखते हुए और लगभग 9-10 बजे के बाद ही भोजन करते हैं, जबकि जो आइडियल टाइम है भोजन करने का वो लगभग शाम में जो है 7 बजे तक हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए ताकि उसको पचने के लिए जो है प्रॉपर टाइम मिल सके। तो ये 3 चीजें हैं, व्हेन वी ईट, व्हाट वी ईट, वेयर वी ईट एंड हाउ मच ईट। अब इसमें आहार में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है गोल्डन मिल्क, जिसको कि हम सामान्य भाषा में हल्दी दूध कह सकते हैं। इसमें हम ½ टीस्पून हल्दी जो है उसको 150 ml हॉट मिल्क के साथ जो है 1 और 2 इन अ डे ले सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी जो है फाउंड टू बी हाईली बेनिफिशियल इन बूस्टिंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। तो इसका जो है बहुत बढ़िया रोल है इम्यूनिटी को बढ़ाने में, और जो भी कुछ इन्फेक्शन होता है उसमें हम लोग बचाने में शरीर को जो है इसका बहुत बढ़िया रोल है। इसके बाद आता है स्पीसेज। हम लोग सभी जानते हैं कि किचन इज द प्राइमरी फार्मेसी, स्पीसेज आर द बेस्ट मेडिसिन, इट कैन एक्ट एज मेडिसिन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन व्हेन यूज्ड इन राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन डेली कुकिंग। तो ऐसा जो हमारे यहाँ स्पीसेज यूज होते हैं जैसे हल्दी हो गया, जीरा, धनिया, लहसुन, तो ये जो है इसको हमें रेकमेंड करना चाहिए कुकिंग में, लेकिन इसका जो क्वालिटी और क्वांटिटी इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में बताया कि हाउ मच। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो है और इसको अपने कुकिंग में शामिल करना है। यह भी जो है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो डिजीज होती है उससे लड़ने में जो है प्रिवेंट करता है ये। नेक्स्ट है उष्ण जल का सेवन। तो आजकल कोविड में प्रायः बताया जा रहा था कि जब भी हम पानी लें उसको थोड़ा सुषुम जल का ही सेवन करें। तो मेनली जो है ये जो हमारा यूटीआई होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, उसमें ये जो है हाईली रिकमेंडेड है हॉट लिक्विड, जो कि वहां पर जो भी कुछ इन्फेक्शन होता है उसको जो है ये दूर करने का काम करता है। अब आता है क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको कि 2 कंसेप्ट है, एक आहार, दूसरा विहार। तो विहार मतलब हो गया जो भी हम डेली रेजिमेन करते हैं सुबह जगने से लेकर के रात्रि सोने तक, उसके द्वारा हम कोविड-19 को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। ये लगभग आपको 4:30 से 5:30 के बीच का समय होता है सुबह का। तो उस समय जो है हमें जागरण करना चाहिए। इससे जो है कंस्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है यदि कोई डेली रूटीन में इसको शामिल कर ले तो। और इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ये जो है प्रमोशन ऑफ आयु, अग्नि, धी, स्मृति, इसको जो है ये बढ़ाने का काम करता है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त जो शब्द है ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ब्रह्म का मतलब ही ज्ञान होता है। तो यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करते हैं तो उस समय सभी को पता है कि प्रकृति बिल्कुल शांत होती है। तो उस समय कुछ भी हम अध्ययन, अध्यापन इस तरह का कार्य करते हैं तो काफी लंबे समय तक जो है हमारे स्मृति में वो बना रहता है। तो प्रायः ये कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जागरण करें। उष्ण जलपान, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि कोविड में जो है काफी इसका कंसेप्ट बढ़ गया था। तो इसमें जो है हमें कुछ हर्ब्स हैं जिनको कि बॉइल करके और उसको ड्रिंकिंग पर्पस से जो है यूज करना चाहिए, जिसमें कि जिंजर, बेसिल, तुलसी, क्यूमेन सीड्स, ये सब है जो कि इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं उष्ण जलपान के लिए। और ये जो चीजें हैं ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कफ का शमन करती है। यदि किसी को श्वास, कास इस तरह की बीमारियां हैं उसको भी जो है ये दूर करती है। थ्रोट पेन हो और हेल्थ को, ओरल हेल्थ को ये प्रमोट करती है।
तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है निद्रा। तो जैसा कोविड प्रोटोकॉल में भी था कि हमें निद्रा जो है प्रॉपर वे में 6 से 8 घंटे जो है निद्रा लेनी चाहिए, और ये हमारे यहाँ इसका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है कि निद्रायतम सुखम दुखम उत्तिकार्षम बलाबलम विशिष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। मतलब कि सब कुछ जो है वो निद्रा के अधीन बतला दिया गया। ठीक है, यदि हम प्रॉपर वे में निद्रा लेते हैं तो हमारे शरीर हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमारा शरीर पुष्ट होता है, बल की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। और यदि हम प्रॉपर वे में निद्रा को नहीं लेते हैं तो फिर ठीक इसके विपरीत जो है वो शरीर में रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब है कौन कौन से हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो कोविड मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 to 5:30 ml। देन हमने बताया आपको उष्ण जलपान, ड्रिंक वार्म वाटर अबाउट 100 ml to 640 ml, स्टोरिंग कॉपर वेसल्स, देन जो है क्लीनिंग फेसेस एंड ओरल कैविटी, ब्रशिंग टीथ, एस्ट्रीजेंट टूथ पेस्ट और पाउडर, टंग क्लीनिंग। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट गार्गलिंग विथ वार्म वाटर एडेड विथ साल्ट एंड हल्दी। गार्गलिंग जो हम करते हैं नॉर्मल वाटर से करते हैं, लेकिन उसमें यदि हल्दी और थोड़ा सा हम साल्ट मिला लें, स्पेशली सेंधा नमक, ठीक है, सिंधा नमक जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। देन जो है वॉशिंग फेस विथ वार्म वाटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ अणु तेल ईच नॉस्ट्रिल। जो हमारे दोनों नाक है उसमें जो है अणु तेल एक आता है, मेडिकेटेड ऑयल है आयुर्वेद में, उसके 2-2 ड्रॉप जो है दोनों हम नासिका में डालें, इससे जो है इन्फेक्शन रुकता है। एंड ऑयल एप्लीकेशन डेली एटलीस्ट 1 हेड, ईयर एंड फुट, प्रेफरली होल बॉडी वंस अ वीक। ऐसे तो आपको हेड, ईयर और फुट पे डेली एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन होल बॉडी में कम से कम जो है सप्ताह में 1 दिन ऑयल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। एंड लाइट फिजिकल एक्सरसाइज, ये इम्यूनिटी बूस्टर मेजर्स हैं सेल्फ केयर के, जिसमें जो कि हम कोविड-19 से इसमें बचने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें कि आपको नशे आता है, नेजल इनहेलेशन है, आयुष काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी दूध है, औषध कवल है, औषधीय भाप का ले सकते हैं, और योगाभ्यास। नश्य में हम क्या करते हैं कि ये जो है डेली नेचर एप्लीकेशन है ऑफ 2 ड्रॉप्स ऑफ सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी इन बोथ नॉस्ट्रिल्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब कि हम सुबह और शाम दोनों टाइम जो है या तो सीसम ऑयल मिल जाए या फिर कोकोनट ऑयल या फिर घी हो, तो इसको जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक बना बनाया आता है और बहुत फेमस, ये किसी भी इजली दुकान पर अवेलेबल होता है, अणु तेल, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों को जो है दोनों तरह से एक्ट करता है। किसके लिए? तो फॉरेन बॉडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इनसाइड नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनके लिए जो है एक बैरियर का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको कोविड में जो है या ऐसे भी डेली यूज में भी जो है इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो इसमें जो है सभी जानते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, रिस्पिरेटरी एंड हैंड हाइजीन, वियर मास्क। नेक्स्ट इसके बाद जो है ये पूरे आयुर्वेद के प्रोटोकॉल है, जिसमें कि गार्गल विथ वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर और बॉइल्ड वाटर विथ हर्ब्स लाइक जिंजर, क्यूमिन, कोरिएंडर फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट वन इज वाटर बॉइल्ड विथ त्रिफला, यष्टि मधु कैन बी यूजफुल फॉर गार्गलिंग। एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल, षडबिंदु तेल और अणु तेल once or twice a day, especially before going out and after coming back to home. स्टीम इनहेलेशन विथ अजवाइन, पुदीना और यूकलिप्टस ऑयल। जो भी हम स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं, यदि उसको इसमें हम ऐड कर लें अजवाइन, पुदीना या फिर यूकलिप्टस ऑयल को, तो मोर इफेक्टिव हो जाएगा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा वो। ड्रिंक कोल्ड मिल्क एंड ड्रिंक आयुष क्वाथ। फ्रेश वार्म बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडिक्वेट स्लीप ऑफ 6 to 8 आवर्स, कम से कम 6 से 8 घंटे की हमें प्रॉपर स्लीप लेना है। मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज, फॉलो योगा प्रोटोकॉल, यूज ऑफ च्यवनप्राश एटलीस्ट 10 ग्राम विथ वार्म वाटर और मिल्क once a day, एंड गुडुची एक्सट्रैक्ट पाउडर विथ वार्म वाटर twice a day for 30 days। मिनिमम 30 दिन तक जो है हमें, जिसको कि गिलोय कहते हैं, उसका हमें पाउडर या फिर टैबलेट जिस फॉर्म में भी हमें मिले उसको हमें यूज करना है। इसका एक बहुत अभी रिसर्च हुआ है, मैसूर में एक वो है आपको जिसको हम लोग टिड्डा कहते हैं, उसका एक रिसर्च सेंटर वहां पर है। तो वहां पर इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है जिसमें कि जो टिड्डों की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 7 से लेकर 14 दिन तक होती है, और जब उनको गुडुची एक्सट्रैक्ट खिलाया गया तो उनका एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ करके 50 to 84 डेज हो गया।
तो इससे ये पता चलता है कि कितना इफेक्टिव है। तो इसका प्रयोग जो है मिनिमम 30 दिन तक जो है करना है, इससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। अब ये आयुष काढ़ा के कंटेंट है, यदि कोई परचेज नहीं कर सकते हैं तो ये हमारे घर में प्रायः पाई जाती है। तुलसी घर में मिल जाता है, मुनक्का, दालचीनी, काली मिर्च और शुंठी, इन सभी को मिला करके इक्वल अमाउंट में लेना है इसको, और इक्वल अमाउंट में लेकर के इसको हमें कोरस पाउडर बना लेना है। और उसके बाद जो है हमें ये काढ़ा बना करके और इसका यूज करना है। उसमें करना क्या है काढ़ा बनाने में कि जब पानी को बॉयल करना है, जब पानी बॉयल हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ये लगभग 1 चम्मच के आसपास काढ़े को डाल करके और उसको ढक देना है। और ढकने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट के बाद जो है उसको छान करके और उसको पी लेना है। उसको बॉयल नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल होते हैं जो कि उड़ जाते हैं, तो इस कारण से जो है उसको ढक के रख देना है, फिर उसका प्रयोग करना है। च्यवनप्राश ये भी बहुत अच्छा है। ये जो है हमारा इम्यून स्टिमुलेशन इज प्रूवन एज अ की इन इम्यून सेल्स दैट इज डेंड्रिटिक सेल एंड मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आंवला है, और सभी हम जानते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, और इसको यदि हम डेली कंज्यूम करते हैं तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत बढ़िया होता है। और स्पेशली जो है कोल्ड और कफ को दूर करने में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारा विंटर सीजन चल रहा है, और इस समय जो है कोई भी यदि लगभग 2 चम्मच के आसपास आंवले का रस और 1 चम्मच शहद यदि मिला करके 1 महीने सेवन कर लेते हैं तो उससे जो है व्यक्ति की इम्यूनिटी काफी अच्छी हो जाती है और बीमारियां जो है उसको काफी कम होती हैं। तो इसको भी हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन है, अभी मैंने इसके विषय में बताया आपको। सनसमनी बटी, ये एक भारत सरकार का गाइडलाइन में है ये, इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है 2 टैबलेट्स डेली। तो इसका भी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो कुडुची ही है। तो अभी जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको ऑकरेंस से रोकता है ये। अब इसमें आते हैं 3 मेनली है, एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट। तो इसमें हम क्या क्या आयुर्वेद का प्रोटोकॉल है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कोई एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है तो उसपे हम किन दवाओं का प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम लोग सनसमनी पट्टी और गुडुची पिपली जो है चूर्ण, इसका प्रयोग कर सकते हैं बीडी में। उसके बाद से आयु 64 अभी काफी लार्ज स्केल पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका डिफरेंट स्टेट में जो है वितरण कराया गया था। तो इसको जो है 500 मिलीग्राम जो है ट्वाइस डेली फॉर 15 डेज प्रयोग कर सकते हैं। गार्गलिंग विथ वार्म वाटर थ्राइस अ डे एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ अणु तेल इन ईच नॉस्ट्रिल, इस सिम्प्टोमेटिक में। इसी पे आगे जो है स्टीम इनहेलेशन का हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। एक त्रिभुवन कीर्ति रस आता है, ये भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका हम ट्वाइस प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी विलास रस है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड योगा एंड प्राणायाम का जो है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि कोई माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव केस आता है तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, तो वहां पर जो गाइडलाइन है उसमें महासुदर्शन घन बटी है, अमृता रेस्ट है, यूज ऑफ सड़ंग पानी है, पंचकोल, यवागु, मंड, पेया, ये सभी जो है हम प्रोटोकॉल में है, इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि उसमें किसी को कफ आ रही है तो उसमें हम सीतोपलादी चूर्ण, टंकन भस्म, कनकाशव, इनका प्रयोग कर सकते हैं। माइल्ड के बाद मॉडरेट, यदि मॉडरेट कोविड-19 पॉजिटिव केस आता है तो वहां पर थोड़ा सा हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। उसमें हम फिर सोर थ्रोट या फिर लॉस ऑफ टेस्ट है तो उसमें हम जो शादी बटी या फिर लक्ष्मी विलास रस, उसको तांबुल जो पान का पत्ता आता है उसके रस के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लवंगादी बटी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को डायरिया हो गया है तो वहां पर हम कुटच घन बटी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या काफी सांस बढ़ गई है तो वहां पर फिर हम श्वास का चिंतामणि रस, अबरक भस्म, श्रृंग भस्म, श्वास कुठार रस या फिर षोडमालिनी वसंत रस है। तो ये सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनका प्रयोग करके हम जो भी हमारे मॉडरेट पेशेंट जो है कोविड पॉजिटिव, उनके सिम्टम्स को हम दूर कर सकते हैं। अब आता है पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। कोविड ठीक हो गया उसके बाद भी जो है काफी लंबे समय तक वीकनेस जो है वो बनी रहती है या फिर लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए जो है अश्वगंधा पाउडर आता है, उसको हम लोग 1 से 3 ग्राम में जो है ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, 15 डेज के लिए दे सकते हैं। आंवला पाउडर है, उसको 1 से 3 ग्राम पर डे दे सकते हैं। मुलेठी पाउडर, वो भी 1 से 3 ग्राम जो है ट्वाइस अ डे विथ ल्यूकवार्म वाटर। च्यवनप्राश 1 TSF वंस डेली। आयुष्पात
ठीक होने के बाद भी इसको कुछ समय तक लेना है 150 ml डेली में, एंड सनसमनी बटी 500 बीटी। अब आते हैं रोल ऑफ योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। ये भी जो है, जो हमारा उस समय एक फिजिकल मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने में काफी मदद करता है ये। तो इसमें जो है मेनली हम लोग अनुलोम विलोम ये जो है कर सकते हैं प्राणायाम में, और योगासन में जो है कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली और शीतकारी जो योगासन है उसका प्रयोग जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो है काफी बढ़िया इसका रिजल्ट है, स्पेशली जो सांस की जिनको तकलीफ है उसमें जो है ये आपको कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली और शीतकारी जो है ये तीनों चारों प्राणायाम जो है काफी इफेक्टिव है इसमें। हमारे यहाँ बताया गया है कि वन हु ऑलवेज रिस्टोर टू डिजायर फूड एंड रेजिमेन लाइफ स्टाइल, जिसको हम कहते हैं, इज ऑब्जेक्टिव, अनइंटरेस्टेड और सेंसेबल अफेयर्स, जनरस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, हैविंग पेशेंस एंड हु वैल्यूज ट्रेडिशनल विजडम विल नेवर बी अफेक्टेड बाय द डिजीज। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसको हम लोग अपने जो छात्रों को पढ़ाते हैं उसको बताते भी है। नित्यम हिता विहार से भी समीक्षकारी विशेषज्ञता दत्ता क्षमा सत्य परा क्षमावान आप तो से भी चब होते रोगा। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ करके अपने नित्य कार्यों को करता है, जो भी हमारे डाइट रेजिमेंट बताए गए हैं उनको बिल्कुल फॉलो करता है, किसी प्रकार का गलत आचरण उसका नहीं है, जो भी कार्य कर रहा है उसको समीक्षा करके कर रहा है, किसी विषय के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, दया का भाव रखता है, तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो बीमारियों से दूर रहता है, उसको बीमारियां जो है जल्दी इफेक्ट नहीं करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Thank you, Dr. Sahab, for giving a very nice and relevant presentation. What is needed in present time, because again the corona third wave has knocked the door, and your presentation was a very useful. And this was the theme of this program, that how to explore our traditional knowledge, not only in the field of Ayurveda, but in the field of spiritualism and our knowledge of Vedas. So you have, sir, beautifully explained all these things and what is the strength of our traditional knowledge. And if we follow our those traditional values and knowledge, the citizen of country will remain healthy, fit, not only physically but mentally also. So Brahma Muhurt, right from Brahma Muhurt to Khan Pan, Har, Vihar, you have explained, sir, everything in a very decent way, sir. And I am just missing that since last 3 of the program, why I could not approach Ayurveda college. But anyhow, there I durust hai, sir. And I expect in our future program, your such type of assistance, your such type of rendering your support will get always from in Bihar Council and Science and Technology. And your programs are not only but your program is also in consonance with the 17th sustainable goal, that is to provide a quality life and a healthy life to each and every citizen. So, and this can only be possible if we explain our traditional values and traditional knowledge. So thank you, sir. And in advance, sir, my request is, whenever I send a request to join this type of program, you please spare your valuable time, because your lecture will be useful for each and every citizen. Not only, sir, your program is viewed at national level. So what is thank you, sir. Thank you, sir. You have given suggestion, it is viewed at the national level. So, sir, I request you to just to join whenever, sir, I invite you, for the sake of or for the welfare of the society, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Dr. Saab, thank you once again. Thank you, sir. So Okay. now, Sir, may I leave now? Yeah, sir, you can leave, sir. Okay, Sir, thank you you. can leave, sir. I Okay, know thank your you, sir. engagement, sir. So you can leave, Okay, sir. thank If you, you sir. wish, Thank you can leave, sir. Okay. Okay. So ज्वाइन करेंगे क्या ये अच्छा, I think my next speaker has some technical problem, so by then I invite Miss Salini Kumari from Patna
to give her presentations. You are young innovator. So, Miss Salini Kumari, you just give your presentation. Hello. Please go ahead. Please go ahead. So first, Salini, the congratulations from the side of Bihar Council and Science and Technology for innovation of modified walker with adjustable leg. Am I correct? Yes, Miss Salini, please go ahead. Yeah, can you push that? Hello. Yeah, you are audible. Go Yes, ahead, sir. Thank Salini. you. या मैं मेरी तरफ से सारे लोग जितने भी प्रेजेंट हैं मैं सबको नमस्कार कहती हूँ। जी, मेरा यहाँ पे जो इनोवेशन है एक मॉडिफाइड वॉकर है, लेग एडजस्टेबल मॉडिफाइड वॉकर। पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। बहुत सारे स्टेशंस वगैरह पे आप हॉस्पिटल्स में लोगों को वॉकर यूज करते देखते होंगे। तो वो जितने भी वॉकर्स थे उन्हें हम लोग सीढ़ियों पे यूज नहीं कर सकते थे। तो कुछ साल पहले मेरे दादाजी वॉकर यूज करते थे और मैं उन्हें बस ऑब्जर्व करती थी कि वो सीढ़ियों पे नहीं जा सकते हैं। तो मेरे अंदर एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इसे सीढ़ियों पे हम लोग चढ़ा सके, मीन्स उसे सीढ़ियों पे यूज कर सके। तो मेरा ये एक आइडिया था जिसे मैंने इम्प्लीमेंट किया और उसके कारण से एक एडजस्टेबल वॉकर बन पाया है जिसको अभी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अभी मेरे पास प्रेजेंटेशन तो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब होने के कारण मैं उसे शो नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा ये आइडिया था जिसे मैंने इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण से मुझे काफी सारे अवार्ड्स मिले एक बढ़ोतरी की ओर, मतलब बढ़ावा करने के लिए। और ये कुछ ज्यादा लोगों का इससे बहुत ज्यादा जुड़ाव इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल पे ये एक इनोवेशन है। जैसा कि हम लोग पहले बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, फ्रिज होते हैं, आपके वॉशिंग मशीन होते हैं, ये सब बड़े बड़े घरों में यूज होते हैं। लेकिन ये एक इन्वेंशन ऐसा है, ये इनोवेशन ऐसा है जिसे एक वो लोग यूज कर सकते हैं जो हैंडीकैप्ड है। तो मेरा ये इनोवेशन था जिसके बारे में मुझे बताना था। No PowerPoint Hello. presentation or any Salini, you have no any PPT or video? No, sir. Now I Right. don't have any PPT because I have my laptop is not working. That's why. Okay. Thank you and congratulations for just doing such a nice innovation work. Thank you once again. And if any support is required from the side of Bihar Council and Science and Technology, you are always welcome here to get assistance from this office or organization. So Yes, sir. thank you, Shalini. Thank Thank you, you. sir. Okay. Thank you. So now I invite Mr. Abhishek Bhagat. Mr. Abhishek Bhagat, he is also young innovator and the field he has innovated automatic food making machine. Mr. Abhishek Bhagat, you are listening me? एंकर सिंह ज्वाइन कर लिए। मिस्टर अभिषेक भगत,
Good morning, sir. Good morning, sir. NK Singh Saab. Good morning. You are not audible, sir. You are, please, I think, unmute your mic, sir. Mr. Abhishek Bhagat, you are not here. So, Mr. Suraj Kumar from Nalanda, he has innovated potato harvest. Sir, now I am audible. Yeah, you are quite audible, sir. So, सर माफी चाहता हूँ, काफी मैं लेट हो गया हूँ दूसरे काम के कारण, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने टाइम पर मैं आ गया हूँ. बिल्कुल सर, आपका जो टाइम था आप उसी टाइम पे आए हैं सर. सर और लोग क्षमा प्रार्थी हूँ. जी सर, और लोग एक्सपर्ट लोग, they have delivered their lecture, and the first lecture was delivered by Dr. Somen Mathi on brick technology, and he has done a very innovative work in brick technology, particularly for the state of Bihar. Second speaker was from Indian Council of Agriculture Research, Dr. Tanmay Koleji. He has also shown his efforts in agriculture sector, not only agriculture sector, but animal husbandry sector also. And he had asked for sanctioning of some projects also. I have requested him to submit your project, and the Bihar Council on Science and Technology will recommend your project to the DST Government of India. And next one was given by Dr. Rohit Ranjan from Government Ayurvedic Medical College. He had also given a very nice presentation how prevention may be taken during COVID-19, and the COVID third wave has knocked the door. So what precautions should we wear, and how Ayurveda and our traditional knowledge, not only in medicine but yoga also, in So right from spirituality, meditation to ahar, vihar, everything he has explained all the things in a very nice way. And this was quite fruitful presentation given by Dr. Rohit. And another presentation was given by Dr. Salini Kumar. He has invented a modified walker with adjustable leg, and she has won several prizes. And her work and her modified walker is now is being used by handicapped, by physically disabled person widely. So if the two innovators still are left, Mr. Abhishek Bhagat, I'm just calling him, but no response is coming out. So Mr. Suraj Kumar, last, if I just give time to Mr. Suraj Kumar, if he is present in this program, please proceed. Otherwise, I will invite Dr. NK Singh Sahab to deliver his lecture or give his presentation. So, Mr. Suraj Kumar, are you here? Mr. Suraj Kumar or Mr. Abhishek Bhagat, any one of you? So they had joined, but anyhow, maybe some due to technical problem, they may not be able to join this program. They may be disconnected due to some technical or network issues. So, sir, I invite by then I invite Dr. NK Singh Sahab to give his presentation or deliver expert lecture, sir. Good evening, sir. Everybody. Good evening. Good evening. Fortunately or unfortunately, I have been made so much late, and I could not join earlier to listen the presentation of the others people. Sir, it is live on YouTube, and I will send the whole presentation to your WhatsApp number, and you will be able to listen all those speakers, sir. It is recorded, sir. Okay, sir. In this regards, just I would like to inform that I have not worked any type of work has been done by me. Whatever I will just discuss, I'm not going to make any presentation. Sir, literal meaning, what is the subject of your topics? Indigenous technological knowledge. In this regards, I will just discuss, not presentation. In this regards, I would like to speak some things. Indigenous technological knowledge
is local knowledge that is unique for a given culture or society or area, which is passed through generation to generation through their ancestors. It is gained through inheritance from one generation to another generation. It is stored in the people's mind as a memory and activities, and is expressed in form of stories, song, folk, proverb, and what we call dance also. Sir, in this regards, I would just explain little bit the experience. वर्चुअली सर मैं इस पर काफी विश्वास करता हूं, इस नेचुरोपैथी पर। आपको मैं बता दूं कि आज के डेट में भी मैं जल नीति, व्यायाम, प्राणायाम, ये सारी चीजें मैं करता हूं। और मुझे ये चीज बार बार कभी कभी दिमाग में आती थी कि गवर्नमेंट का मतलब खिंचाव इस ओर क्यों नहीं जाता है कि जो हमारी जो ये है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, वो हेल्थ के विषय में हो, एग्रीकल्चर के विषय में हो या एनिमल के विषय में हो, उस पर कोई प्रोग्राम क्यों नहीं बनता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन 3 or 4 days earlier when I got your invitations, I surprised, और मैं उसी समय ये डिसाइड किया कि मुझे इस मीटिंग में भागीदारी देनी है और अपनी जो अनुभव है उसको मैं शेयर करना केवल चाहूंगा, कोई चीज मेरा अपना किया हुआ नहीं है। सर, इस चीज में मैं पहले एग्रीकल्चर, चूंकि नेचुरली जब मैं एग्रीकल्चर का मैं अपना परिचय देना भूल गया और ऑडियंस के साथ, मैं डॉक्टर एनके सिंह, प्रोफेसर एंड हेड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, RPCAU पूसा, और इस विश्वविद्यालय में मैं एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च का भी पदभार संभाले हुए हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल some of the example I would like to explain or discuss with you people. इसके दिशा में पहला मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, धान की खेती जो हमारे पूर्वज करते थे पहले, धान की सीधी बुआई से, जिसको आजकल लोग DSR कह रहा है, डायरेक्ट सीडेड राइस। हमारे पूर्वज जो धान की खेती करते थे सीधी बुआई, उसमें घास की इतनी प्रॉब्लम होती थी कि वो काफी तंग आ जाते थे। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ कि बारिश होती थी, खेत का लोग प्लाविंग कर लेता था, गीला हो जाता था, और धान की बिचरा को लोग रोपनी करते थे, तो उसमें घास की प्रॉब्लम कम हुआ करता था। और धीरे धीरे धान की सीधी बुआई से हमारे पूर्वज धान की रोपाई की ओर प्रोसीड कर गए। लेकिन कालांतर में जब वैज्ञानिकों ने घास को कंट्रोल करने की मॉलिक्यूल्स, मेडिसिन डेवलप कर दिया, तरीका डेवलप कर दिया, किस घास को मारने के लिए कब कितने मात्रा में कैसे कैसे हम दवा छिड़कते हैं और घास कंट्रोल हो जाता है, और इसका उपज धान के रुपाई के बराबर हो जाता है। आजकल हरियाणा, पंजाब, इवन बिहार में भी करीब करीब 1 लाख हेक्टेयर धान की सीधी बुआई हो रही है। यह ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। बारिश, इस बार तो बारिश काफी अच्छी नहीं, ओवर अच्छी हुई, लेकिन पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है, बारिश कम होती है, लेबर नहीं है, तो इन सब कारणों से किसान धीरे धीरे धान की रोपाई के बदले अब धान की बुआई करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं दिया धान की सीधी बुआई, जो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उस पर हमको अब ध्यान देना होगा कि आगे की ओर पानी और लेबर की कमी को सॉल्व करने के लिए। मैं
दूसरी चीज मैं एक बता दूं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, धान की जो रोपाई करते हैं तो आजकल लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि 1 कट्ठा खेत एक आदमी बिचरा उखाड़ के आपके कदवा किए हुए खेत में रोपाई कर देता है। उसमें एक टेक्निक है कि उसका टिलर काफी भरपूर हो, इसके लिए धान की सैलो ट्रांसप्लांटिंग किया जाए, मतलब रूट को केवल कदवा पर सटा दीजिए तो नंबर ऑफ टिलर्स आपके बढ़ जाते हैं। यह मैं एक एग्जाम्पल दिए चल रहा हूं। सर, पहले हमारे पूर्वज लोग जैसे टोबैको के जो स्टेम और तना पत्ता काटने के बाद जो बच जाता है उसको लोग बॉयल करके उसके पानी को स्प्रे करते थे लोग अपने कैटल पिलर्स और हेयरी कैटल पिलर्स या भिन्न भिन्न भांति के कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज अब तो चूंकि दवा इतने आ गए हैं कि ये सब चीज विलुप्त होते जा रहे हैं। फिर उसी तरह से नीम के पत्ते को पानी में बॉयल करके पानी की जब हाफ मात्रा हो जाती है और उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के बाद पानी में डिफरेंट परसेंटेज में घोल करके स्प्रे करते हैं कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए। सर, एक चीज और मैं बता दूं, मैं बचपन में देखा हूं बाहर के जब भेड़ियर और बकरा वगैरह जब लेके झुंड में झुंड आते थे तो गांव के लोग उसको खाना पीना दे करके रात भर रखते थे और अपने खेत में उस बकरी को भेड़ को लोग बैठाते थे और उसके बाद जब खेत की प्लाविंग करते हैं तो उस खेत की फर्टिलिटी काफी अच्छी बढ़ जाती है। सर, ठीक इसी तरह से एक चीज और मैं बता दूं कि जो बचपन में मैं खेती किया हूं, मैट्रिक समय घर पर रहकर पढ़ा था, वहां पर जो तंबाकू के कटने के बाद जो उसके डंठल पत्ते का जो मिड रिब जो बच जाते हैं उसको लोग काट काट कर खेत में जोतने के वक्त मिला देते हैं और उससे होने के बाद टर्माइट की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाया करती थी। ये सारी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं सर, अभी जो हमारी सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहा है उसमें ये सारे पॉइंट्स का महत्व बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से गेहूं काटने के बाद अप्रैल और मई महीना में किसान कहता है कि भाई समर प्लाविंग बहुत जरूरी है। समर प्लाविंग केवल कहता है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है ये समझता है कि नहीं समझता मैं नहीं जानता हूं, लेकिन साइंटिफिक रीजनिंग ये है कि हाई टेम्परेचर पर मई के महीने में जब खेत खुल जाता है प्लाविंग करने के बाद तो जितने कीड़े के लार्वा प्यूपा जब रहते हैं सॉइल में वो सब हाई टेम्परेचर से जल जाते हैं, मर जाते हैं। और ठीक उसी तरह से जो जितने घास पात अनवांटेड घास रहता है वो सब भी सूख जाते हैं। इस तरह से एग्रीकल्चर के एक्टिविटी में भी ये सब पॉइंट्स मुझे आप लोगों से के बीच में डिस्कस करने का मुझे मौका मिला। सर, सिमिलरली अपने जब जानवर के केस में जाते हैं तो जो मैं घर पर रखकर गाय भैंस में पोसा हूं मैट्रिक तक, उसमें जो अनुभव गेन किया हूं उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एज ए ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। गाय और भैंस जब बच्चा देता है तो उसका प्लासेंटा को निकलना बहुत जरूरी होता है। यदि गाय भैंस के बच्चा देने के बाद उसका प्लासेंटा नहीं निकले तो अंदर ही अंदर वो इन्फेक्शन करके भांति भांति की बीमारी पैदा करता है। नॉर्मली वो प्लासेंटा जिसको हम लोग जहर कहते हैं गाय भैंस फेंक ही देता है, लेकिन जब किसी जानवर के साथ दिक्कत होता है और प्लासेंटा नहीं निकलता है तो उस वक्त हम अपने दादा वगैरह को पिताजी को देखते थे, गेहूं के भूसा में बांस के पत्ती को काट करके लोग दौरी में दे देते थे और बांस के पत्ती और गेहूं के भूसा मिला करके खिलाने के बाद घंटा 2 घंटा के अंदर में वो प्लासेंटा निकल जाता था।
तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो हम लोग मतलब आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। सर इसी के संदर्भ में मैं नेक्स्ट एक पॉइंट और देना चाहता हूं कि गाय भैंस का जब अफरा हो जाता है, पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, वह बिल्कुल मरणासन्न पड़ जाता है, वैसी स्थिति में एक घास होता है, घुरमा कहते हैं। आप एक मुट्ठी घुरमा लिया करके उसको आप खिला दीजिए और देखिए आधा घंटा के अंदर में आपका गाय भैंस चंगा हो जाता है। ये सब चीज मैं देखा हूं और प्रैक्टिकल ये चीज होता है। सर इसी के संदर्भ में मैं एक चीज और मैं बता दूं कि एक गाय में खुरहा बीमारी होता है जिसको फुट माउथ डिजीज कहते हैं, वो वायरल डिजीज है। गांव में जब हम बच्चे थे तो गांव के बच्चे सब मिल करके लुकारी जला करके हो करके उसको लोग गांव से बाहर भगाते थे। मैं साइंटिफिक रीजन एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दे सकता हूं, मैं उस चीज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैं बचपन में खुद मैं किया हूं। खुरहा बीमारी को भगाने के लिए इस तरह से भी, भले ही इसके पीछे साइंटिफिक क्या रीजन है मैं नहीं आपको बता सकता हूं। सर इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ के प्रति मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपने बचपना में मैंने जो सीखा है ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, मुझे खूब अच्छी तरह याद है जिस समय मैं 5, 6, 7 साल का होगा और साइकिल मैं सीख रहा था, उस वक्त मैं गिर गया था और पैर में चोट आ गई थी, पैर मेरा पूरा फूल गया था। तो गांव के एक काफी बड़े बुजुर्ग आए और वो कहे कि रे हल्दी पिसवा के चूना मिला के उसको खौला दो और ठंडा जब हो जाए बर्दाश्त करने लायक उसको लेप चढ़ा दो। और मेरे पैर पर ऐसा किया गया और ओवरनाइट मेरे पैर का दर्द खत्म हुआ। मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यह है कि हल्दी चूना के लेप को खौला करके गर्म करके ठंडा होने पर आप चढ़ा दीजिए, आपका दर्द दूर हो जाता है। सर इसी तरह से मैं नेक्स्ट एक पॉइंट में बता दूं, गले में जब टॉन्सिल ठंडा लगता है तो पहले टॉन्सिल खसखसाता है, टॉन्सिल दर्द करता है, उसके बाद सर्दी होता है, तब जुकाम होता है। तो हर कोई, हम और आप सब कोई जानता है, यह कॉमन चीज है। गले की खराश को दूर करने के लिए हम लोग गार्गलिंग करते हैं, पानी को गर्म करके नमक दे करके या फिर हल्दी का बुक्का दे करके या फिर फिटकिरी को मिला करके उससे गलगला करते हैं। और कितना ही भारी आपकी टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, दिन में 2-3 बार आप गलगला कर लीजिए, आप ठीक हो जाते हैं। सर इसी के संदर्भ में मैं एक और बात बता दूं, अभी कोरोना के बीच में काढ़ा की बहुत प्रचलन हुआ था, काढ़ा, और भांति भांति का किस चीज का लोग काढ़ा नहीं पिया। और इसी के संदर्भ में मैं आपको एक जनरल चीज मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूं। कोरोना से मैं दूर हूं, वो मैं कहता हूं अभी ठंडा का मौसम हो गया, बच्चे को सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है और उसमें दवा हम जो एलोपैथिक दवा दे रहे हैं उसका भांति भांति का मतलब उसका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन मेरा एक बार नहीं 50 बार अपने पर, अपने बच्चे पर प्रयोग किया हुआ ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है, यह नॉलेज, वो क्या है, एक श्रृंगार का पेड़ होता है, 5 पत्ता श्रृंगार का पत्ता, 5 तुलसी का पत्ता, आदि का टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा और लहसुन का टुकड़ा, नमक, जमाइन। सर 1 गिलास पानी में ढककर इतना खौलाइए कि वह आधा हो जाए और उसको छान दीजिए, छान के उस बच्चे को पिला दीजिए। तीता बहुत होता है, बच्चा पीना नहीं चाहता है, लेकिन मैं दावे के साथ चाहता हूं, मैं अपने आप पर, अपने बच्चे पर इसका प्रयोग किया हुआ है। कैसा भी सर्दी जुकाम बुखार बिना दवा का 24 घंटा के अंदर में आपके परिवार से भाग जाएगा। यह मैं कहीं सीखा हुआ नहीं, मैं खुद अपने आप पर प्रयोग किया हुआ चीज मैं बता रहा हूं। ठीक इसी तरह का चीज नवजात बच्चे, जो बच्चे का जन्म 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले हुआ है, वो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और रात में वो बच्चे चिल्ला चिल्ला के पैर पटक के रो रहा है, उसकी माँ नहीं समझ पा रही है बच्चे को क्या तकलीफ है। तब जाके वह अपने बूढ़ी सास को जगाती है कि बच्चा चुप नहीं हो रहा है, देखिए क्या हो गया।
उस बच्चे को जो 12 बजे रात में उठकर रो रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, वो बूढ़ी दादी क्या करती है, थोड़ा सा घी हाथ पर लेती है, थोड़ा सा हींग लेती है, उसको हाथ से मिला करके उस बच्चे के नाभि के चारों ओर लगा देती है और बच्चा 2 मिनट के अंदर में चुप हो जाता है। जी, यह भी मेरा देखा हुआ, किया हुआ, कराया हुआ टेक्नोलॉजी मैं बताता हूं। बच्चे जब दूध पीते हैं माँ का, तो पेट में गैस बनता है और उस गैस के दर्द से बच्चा रोता है, और वो घी और हींग का आप नाभि के चारों ओर लगा दीजिए, गैस डिस्पर्स हो जाता है और बच्चा चुप हो जाता है। दिस इज द रूरल टेक्नोलॉजी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर, इसी तरह से मैं एक और चीज बात बता दूं, जो बच्चे की माँ यह बात जान जाती है कि बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके पेट में गैस बनता है, पेट में दर्द होता है, बच्चा रोता है, बच्चा बचा नहीं पाता क्या क्यों रो रहा है, वह तब माँ क्या करती है सुनिए। माँ स्तनपान बच्चा को करा देती है, उसके बाद बच्चा को अपने कंधा पर ये ऐसे रखकर उसके पीठ पर ऐसे थपथपाती है। जी हाँ, मैं पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे। दिस इज ऑल्सो ओल्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। बच्चे को पीठ पर 2-4 बार ऐसे थपथपाती है, बच्चे के मुंह से ढेकार निकल जाता है, मतलब दूध पीने के बाद बच्चे के पेट में जो गैस बनता है, इस तरह से करने से बच्चा चुप हो जाता है, बस बच्चा हंसता खिलता रहता है। जी हाँ, इसी तरह से मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं आज के डेट में आप गैस से बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था। हमको आज साल भर 2 साल पहले किसी ने बताया कि रे कहला गैस की दवाई खाते हो, कितना खाओगे गैस का दवाई, छोड़ो। और मुझे जो पुराने गांव के बहुत पुराने लोग सिखाए, कहे कि 100 ग्राम जवाइन, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम सौंफ, तीनों को हल्का सा तवा पर भूज करके मिक्सी में पीस दो इक्वल मात्रा में, और उसी के अंदाज से काला नमक और हींग उसमें मिला दो। डेली सुबह सोकर जब उठते हैं तो सुसुम पानी में जो पीता हूं, उस समय 1 चम्मच मुंह में डाल करके बासी मुंह है और मैं पी लेता हूं। सर, आज मुझे 2 साल हो गए, मैं गैस के प्रॉब्लम से 2 साल से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। यह आजमाया हुआ और एकदम खूटा ठोक टेक्नोलॉजी है, आप जान लीजिए। सर, इसी तरह से एक चीज और, थोड़ा सा एग्रीकल्चर की फील्ड में मैं आपके साथ में चलना चाहता हूं। पपीता की जो किसान खेती करते हैं, उनको मतलब 10% मेल पौधा और 90% फीमेल पौधा, मेल फीमेल पौधा मिला करके रोपनी करना पड़ता है। लेकिन जो नर्सरी से पैदा होता है पौधा, उसमें कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा यह पहचान में नहीं आता है। तो 3-3 पौधा एक जगह पर 1 कदम की दूरी पर लोग उसकी रोपाई करते हैं, और थोड़ा सा जब एडल्ट हो जाता है पौधा तो मेल और फीमेल का जो फ्लावर आने लगता है वो पहचान में आ जाता है कि यह फीमेल पौधा है। और जो मेल पौधा में फ्लावर आने लगता है, लंबा डंठा बनेगा, तो लोग बुझ जाता है तो फीमेल, यह मेल पौधा बनने जा रहा है। मेल पौधे को फीमेल में कन्वर्ट करने के लिए उसके स्टेम में लकड़ी से छेद कर दीजिए। मेरी आप आवाज और एक्टिविटी समझ रहे होंगे। इतना मोटा जो पपीता का पेड़ है, बस 2-3 फीट ऊपर लकड़ी से उसको छेद कर दीजिए, और क्या होगा, वो छेद कर देने के बाद उसके बीच में जो कैम्बियम और जैबरेलिक एसिड बनती है, उसमें डिस्टर्बेंसेस हो जाएगी और मेल फ्लावर बनने के बजाय फीमेल फ्लावर उस पौधे में बनने शुरू हो जाते हैं। इसमें सक्सेस रेट कम है, लेकिन 25-30% है। 100 पौधे में करेंगे तो 20-25 पौधे में फीमेल पौधा बन जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो हम लोगों को प्रचार प्रसार में लानी चाहिए। सर, एक चीज और मैं बता दूं, जब हमारे किसान खेत में काम करते रहते हैं और कुदारी चलाते हैं, पैर पर कभी कुदारी लग जाता है और कट गया। अब कट जाने के बाद उसको वहां पर क्या है, तो 2 चीज पुराने में जब हम लोग 4th-5th क्लास में पढ़ते थे, ये सब किए हुए हैं। वो गेंदा का फूल, गोल्ड, ये गेंदा का फूल के जो पत्ते होते हैं, उस पत्ते को मैश करके रस को चुला दीजिए, वो उसमें काफी हाईली एंटीबायोटिक होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं,
आप लोग हंसेंगे, यदि जिस किसान का कट गया और वहां पर कोई उपाय नहीं है, वो किसान यदि उस पर पेशाब कर देता है और उसके बाद ये कपड़ा से बांध देता है, उसका घाव सूखने लगता है। आपकी यूरिन में भी एंटीबायोटिक है। ये अप्लाइड चीज मैं आपको बता रहा हूं। सर एक चीज और मैं बता दूं, जो आदमी को दम्मा टाइप का होता है, सांस प्रॉब्लम होता है, उसमें हालांकि जानते होंगे बहुत लोग, लेकिन बोलते हैं कम लोग। थोड़ा सा मैं माने वोकल टाइप का हूं। स्वमूत्र का जो यूज करते हैं, उनकी दम्मा और खांसी और गर्दन की बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। बड़े बड़े आप भी जानते होइएगा, हमारे प्रधानमंत्री, नाम नहीं बोल सकता हूं, प्रधानमंत्री लोग और हमारे अपने एरिया में मैं जानता हूं स्वमूत्र, मॉर्निंग का स्वमूत्र का। हाँ, एक चीज और, मुझे भी बच्चा में दमा फूलता था, तो उस समय मुझे पिताजी जो बाछी, जो गाय बच्चा भी नहीं दी हुई है, उस बाछी का भी पेशाब को, मॉर्निंग का फर्स्ट पेशाब, उसके पूंछ उठा करके और उसको गुद्दी से गुदगुदा करके पेशाब करना शुरू करती थी, तो बीच वाला फ्लो को लेकर के 50 ml हम भी सप्ताह दिन तक पिए हुए हैं इस चीज को, बाछी के मूत्र को। तो ये सारी चीजें ओल्ड टेक्नोलॉजिकल है और हंसने हंसाने की बात नहीं है, ये सब प्रूफ किया हुआ है। सर इसी तरह से और मैं बात बता दूं कि व्यायाम प्राणायाम वगैरह वगैरह जो हम लोग करते हैं, ओंकार ध्वनि जो देते हैं, और हमारे रामदेव जी महाराज आजकल जो प्राणायाम वगैरह सब सिखाते हैं, वो सब भी हम लोग करते हैं। ये सारी चीजें मुझे ऑल ऑफ सडन जितनी चीजें मुझे याद पड़ी थी, उतना मैं कागज पर नोट कर लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने की चीज। और आज भी मैं काफी खुश हूं कि सरकार इसके प्रति सजग हुआ है और इस सब ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को भी राइटिंग में लोग इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मुझे काफी खुशी हुई, और मुझे इस तरह की यदि कोई सर्विस करने की मौका मिलेगी, मैं आपके साथ सहर्ष तैयार हूं सर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। और लास्ट में चलने के वक्त मैं आपको खुदा हाफिज भी कहना चाहूंगा सर। Thank you, sir. Sir, you are treasury of the traditional knowledge, and really, sir, we are very thankful to hear you. And you have shared your real life experience, and it is Yes. it's all those experiences, your own experience you have shared. And Yes. these are all tested experience you have shared. So, sir, सर, we are. सर आपको मैं एक चीज अभी तुरंत दिखाता हूं, 1 मिनट में। सर हेलो हेलो, Sir, you are audible, sir. ऑडिबल, मे बी विजिबल आल्सो? Yeah, it is visible. आर यू Yeah. सीइंग? Yeah, sir. दिस इज द पॉट, और ये पॉट से मैं आज 15 साल से मैं अपना जल नीति करता हूं। दोनों नोस्ट्रिल में गर्म पानी करके नमक और सौंफ खौला देता हूं। जब बर्दाश्त करने के लायक हो जाता है, मैं इसको करता हूं, और उसके बाद व्यायाम प्राणायाम करके जो एक्स्ट्रा पानी मुझे नाक में रह जाते हैं, उसको मैं निकाल लेता हूं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को थैंक्स देता हूं फॉर योर काइंड हियरिंग आल्सो। सर जस्ट मैं ये आपको दिखा रहा हूं। So your verbal presentation, sir, was much far better than any PowerPoint presentation, sir. And sir, whenever I sir invite you, you please spare your time with us. Not only with us, but again I am saying that the whole country is seeing this program. So whatever your experience is or are, it would be quite beneficial for the whole country. And sir,
these programs are for 1 year. Each and every month, this program has to be celebrated. And I think your knowledge and your experience is relevant to all the themes, whatever the DST government of India has sent us. So right from January and onward, sir, I will call you and I request you to give some valuable time for this program, not only for this program, but for Bihar Council on Science and Technology also. And I request you to go for documentation of your experiences, whatever you have, sir, and BCST will fully support your, sir, project. So this type of project is required for the whole nation, because we are talking about traditional indigenous technology, and for that we have to explore our traditional knowledge, whatever we had, we rich traditional knowledge, not only traditional knowledge, but we have our own rich traditional knowledge as compared to any other country. So sir, thank you. Thank you सर, मैं इसी के साथ एक चीज बता दूं, मैं बाय प्रोफेशनल आई एम ब्रीडर और राइस ब्रीडर, राइस क्रॉप पर मैं काम करता हूं, और मैं 16 धान की वैरायटी निकाली हूं, और लेटेस्ट धान की वैरायटी हमारी राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सरस्वती, राजेंद्र नीलम, राजेंद्र सुहासनी, राजेंद्र कस्तूरी, ये सारी वैरायटी हैं जो बिहार में सब चल रही है, बिक रही है, ये सब सेंटेड भी है हमारी। सर, राजेंद्र भगवती की मैं 2 प्राइवेट कंपनी को दे दिया था लाइसेंस, वो लोग सीड प्रोडक्शन करके, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस है, और एक्सपोर्ट होती है हमारी राजेंद्र भगवती सरस्वती की चावल। तो सर आप अन्नदाता हैं, इसलिए अन्नदाता को हम लोगों के तरफ से कोटिशः प्रणाम। और इसके साथ ही मैं करीब 10 PhD स्टूडेंट निकाला हूं, और करीब 17-18 MSc का स्टूडेंट को भी मैं गाइड किया हूं। तो मैं टीचिंग में भी हूं, रिसर्च में भी हूं, और आपके साथ जो मैं शेयर किया, ये आज तक मैं किसी से बात नहीं किया था, लेकिन मैट्रिकुलेशन तक जो मैं गांव पर रहकर पढ़ा हूं, और बाय वर्च्यू ऑफ ये मैं जो स्टोर किया था, मुझे आपके साथ आज शेयर करने की मौका मिली, और ये सब चीज अपने कलम से हस्तलिखित एक पेपर पर रखे हुए हूं। शायद राइटिंग में यदि आप मांगेंगे तो इसी को डायरेक्टली टाइप करके मुझे देने का मौका मिल जाएगा सर। और डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग अगर टेकअप कर लें तो एक बुक के फॉर्म में, तो अगर आप इसके लिए सर एक बार में मीटिंग आप कॉल कर लीजिए, और ये ऑनलाइन में नहीं, फिजिकली आपके ऑफिस में हम लोग। सर यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। नहीं, वेलकम, इंडिविजुअल वेलकम की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत इस बात की है कि आज आपके साथ जितने लोग ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का शेयरिंग किए होंगे, एक बार आप फिजिकली मीटिंग रखिए अपने आप पटना में। मैं बता दूं, आज मॉर्निंग में मैं सुबह 7 बजे निकला हूं, मैं पटना में ही था, और पटना से दौड़ के आके मैं यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि मैं फेयर में था कि आपके यहाँ फिजिकली मैं ऑफलाइन वहीं पर। So we are sorry sir, we are really grateful to you and sorry for your inconvenience. Anyhow, sir, you have given your valuable time, not only valuable time but आपसे हमारी गुजारिश ये होगी, जितने स्पीकर लोग आज के मीटिंग में भाग लिए, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, और उन सारे पॉइंट्स को एक जगह हम लोग पूरे प्रोग्राम का वीडियो सर मैं आपको भेज रहा हूँ, आज इवनिंग तक मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। क्या व्हाट्सएप पर होगा? व्हाट्सएप पे कर देंगे सर, व्हाट्सएप या यूट्यूब का लिंक शेयर कर देंगे सर। आप उस लिंक को खोलेंगे, यूट्यूब आप देख पाएंगे सर, वो शाम तक मिल जाएगा सर। सो नाइस ऑफ यू सर। और डॉक्टर अनंत कुमार का मैं फोन रिसीव करता था, फिजिकली मैंने दर्शन हो गया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि मैं आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इससे भी बढ़कर आप धन्यवाद के पात्र तब माने जाएंगे जब इस स्कीम को आप त्वरित गति से आगे बढ़वाइए, कि ताकि हम लोग
ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है उसको संग्रह कर सके, लोगों के बीच में प्रचारित कर सके, और लोगों को लोग जैसे अभी एक सर इसको बुक के फॉर्म में दे दे, मैं पब्लिश करवा दूंगा बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सब लोगों की नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेंगे। जी जी, ये तो हमको ऑल ऑफ सडन जितनी बातें याद आई उतनी चीजें करते गया। तो चलिए, सो नाइस ऑफ यू सर। और थैंक यू, थैंक यू। लेट आया, सबसे लेट आया, इसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं सर, मैं वर्चुअली चाहा था कि आपके तारामंडल में उपस्थित हो करके। आइए सर, वेलकम सर, जब कभी हो। तो चलिए, अच्छा लगा सर। जी 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 जी। So now I invite Dr. Subha Sinha ji to propose a vote of thanks to our learned speakers and all councils of the state. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Am I audible, sir? Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. You are audible. Okay, sir. Audible. Honorable Project, good afternoon to all. Honorable Project Director, Dr. Anant Kumar, Bihar Council on Science and Technology, Department of Science and Technology, Government of Bihar, Government of India officials, Dr. Devpriya Datta, Scientist cum Advisor, Department of Science and Technology, Government of India, Dr. Rashmi Sharma, Scientist, Department of Science and Technology, Government of India, and the coordinator of this program, State Council of Science and Technology and Environment, Meghalaya. Dr. Somen Maiti, Chief Technology Officer of Technology Action for Rural Advancement and Vice President of Development Alternatives, Dr. Tanmay Kole, Scientist, ICER Patna, Dr. Rohit Ranjan, Government Ayurvedic College and Hospital Patna, Ms. Shalini Kumari Patna, Mr. Abhishek Bhagat, Bhagalpur, Bihar, Mr. Suraj Kumar, Nalanda, Bihar, Dr. N.K. Singh, Professor cum Chief Scientist, Dr. Rajendra Prasad, Central Agriculture University, Pusa, Samastipur. I am Dr. Shubha Sinha, Special Officer at Bihar Council on Science and Technology, feel honored and proud to have the opportunity to present a vote of thanks on behalf of Bihar Council on Science and Technology. My sincere thanks to Department of Science and Technology, Government of India, to sensitize not only all state councils, but the research institutes also. This program has resulted into establishing a very strong linkage and coordination between the state councils and the research organization of the state. I extend my sincere thanks to a team of very active and dedicated officials of the ministry, Dr. Devpriya Datta and Dr. Rashmi Sharma. They have constantly been rendering their support like hand holder to organize this program itself by the state councils. I also thank State Council of Science and Technology and Environment, Meghalaya, for his whole team from my bottom of heart to take this responsibility of organizing Vigyan Mahotsav under Azadi ka Amrit Mahotsav Karikram. My special thanks to all the renowned speakers and eminent scholars for sharing their research and innovation on theme of indigenous technologies as a showcase and giving your valuable suggestions and inputs in furtherance of science and innovation to make Atmanirbhar Bharat. I wish to extend my sincere thanks to representatives of all the state councils of science and technology and others who joined us today to make this program successful. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Subhaji. So I think with due permission from our eminent speakers, the meeting may be over now, sir. Okay, sir. Namaste. Okay, namaste, sir.
सर फिर हम लोग तुरंत ही मिलेंगे सर, और अपने आगे का जो भी प्रोग्राम है सर उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड हम लोग करेंगे सर। तो थैंक यू सर, वेटिंग फॉर दैट टाइम। और इन सारी नॉलेजों को, इन सारे नॉलेजों को बुकलेट फॉर्म में हम लोग ये करें और सही माने में पब्लिक को जागृत करें कि अरे अंग्रेजी दवा खाने के बजाय तो भाई इसी से करो ना, ये सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, लोगों को जैसे हम एज एग्रीकल्चरिस्ट इनऑर्गेनिक फार्मिंग से डाइवर्ट करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं चलने के लिए, उसी तरह से हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए अंग्रेजी दवा के विपरीत ये अपने ओल्ड टेक्नोलॉजी से, नॉलेज से जितनी सारी चीजें हम मैनेज कर सकें, ये चीज हम चाहते हैं लोगों के बीच में जागृत करना चाहते हैं। Thank you, sir. Thank you. So now we may leave now, and the meeting is over, sir. Okay. Okay. Thank you for giving your. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. तारामंडल में आपको क्या जरूरत है? कुछ ही अलग के भाषण दिए हैं आप। ओल्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के यूनिवर्सिटी से भारत सरकार कहाँ से नाम हमरा लिया हम नहीं जानते हैं। हाँ। भारत सरकार का साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया, ये 7 आदमी को इकट्ठा करके और उन लोगों को कहिए कि उनके पास जो भी ओल्ड टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लोग जानते हैं उसको लोग व्याख्यान करें। इतना कलर लिखवा हम लोग बना देंगे फिर तो खाया एगो तो शीश खत्म हो गया। खाली शीशी खत्म करे खाली मीठा अथी खाया, मीठा नहीं बनाया है। खाने तो बड़ी मजा लगा मीठा चीज। महेश अब तो इधर नहीं फोन देखा निकालो ना, देखो ना।